हेलो। स्ट्रीम कर रहा हूँ।
Uh, Guys, if anyone is new, like the stream, subscribe to the channel, and put something in the live chat so that I can read, I can respond to you guys. Or else I have to just be quiet and even you guys will get bored. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सब कैसा हाल चाल? ऐसा गंदा हेडेक हो रहा है ना मेरे को। नहीं ब्रो, बहुत अ, तबीयत बहुत खराब चल रही है अभी। So I was taking rest. Even now बहुत ज़्यादा कोल्ड काफ सब है। So first thing is your health, second comes money. बट अभी एक प्लान है गोल्ड में। अ, इधर से सेलिंग का प्लान है। Gold today I'll be going for sales. Gold is bearish, पूरा bearish हुआ है गोल्ड, तो सेल्स का प्लान है। टुडे वी आर गोइंग फॉर सेल्स until we reach this support. So it's very much simple plan today. What we are going to do is एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, ब्रेक होने पर इधर पे लिक्विडिटी आएगी। when the liquidity is present, we'll wait, इधर से ये लेवल से एक रिजेक्शन, as soon as we see a rejection we'll just enter here only for sell side trade aiming for this support. हम लोग इधर पे एंट्री नहीं करेंगे, we'll enter here above only. इसे we'll get a better entry and a better stop loss. Like before how we used to do is, अरे भाई गलत लग गया, just delete this level. Yeah, so before what we used to do is, इधर here हमारा आर रहता था ऑफ 10 पिप्स, राइट। 10 पिप्स का इधर स्टॉप लॉस रहता था। we would wait कि this would give a breakout, then when it reverses we would take entry here and a stop loss about this level. But now yesterday I had back tested and did many things. So according to that what I felt is we have to go to 1 minute level time frame, 1 minute time frame, then we have to search for a good resistance level above this breakout. अभी breakout के बाद the next nearest good resistance is this level, right? जो before it was support, now it got broken, now it's into a resistance zone. So now the plan is we'll wait for a breakout here, and if we see a rejection from this level we'll enter here only by placing 10 pips stop loss above this, so that we get a better entry and a better stop loss. So how it works is, I'll just tell you one second. ये हमारा आर हो गया। दिस वाज सपोज टू बी आवर ओल्ड स्ट्रेटेजी, लाइक इधर पे स्टॉप लॉस लगा दे ऑफ 10 पिप्स, राइट। So now what we are doing here is we are gonna take our entries here in the above level only in this rejection, because we know कि इधर से रिजेक्शन लेके इसको क्रॉस करने के बाद ही our entry will get triggered. So why not take entries a bit early? इधर पे एंट्री लोगे तो 10 पिप स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर आ जाएगा। सो विल हैव अ, अगर हम लोग पुराना वाला मेथड फॉलो करते हैं क्रॉसिंग दिस लेवल after liquidity grab then moving, then our stop loss would be of around 18, 19, 20 pips, right? But now we'll get our stop loss as small, we'll get our targets big. And इधर भी हम लोग क्या कैसा प्लान कर रहे हैं इन गोल्ड। तो एज सुन एज ये लेवल मार्क हुआ, राइट, इधर से हमारी एंट्री हो गई। नाउ व्हेन द मार्केट कम्स टू दिस कैंडल्स इस लेवल पर आ जाएंगे,
ऊपर से जो है हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट पर। ओके, सो हियर और स्टॉप लॉस इज कॉस्ट टू कॉस्ट प्लस we'll have a buffer क्योंकि हमारी ओरिजिनल एंट्री होनी थी इधर पे, बट वी आर टेकिंग अर्ली एंट्रीज, राइट? सो वी हैव दिस मच स्पेस left for market to move. It's little bit a kind of complicated thing. I'll just explain you first how we used to trade before, ठीक है? ये पहले एक रेसिस्टेंस था, फाइन। तो जब भी एक रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, व्हाट कम्स इन, लिक्विडिटी कम्स इन, राइट? आफ्टर लिक्विडिटी के बाद जो इधर पे फ्रेश बायर्स आ रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस नीचे प्रेजेंट होंगे। वी यूज टू वेट फॉर द मार्केट टू क्रॉस दिस लेवल अगेन, और जब ये क्रॉस करके वापस से लेवल के नीचे आता था, देन वी यूज टू गो फॉर अ सेल साइड ट्रेड, राइट? तो हमारी ओरिजिनल जो आरआर होती थी इधर पे हमारे ऐसे होती थी, राइट? सो हमारा ओरिजिनल एंट्री वी यूज टू टेक इट हियर एट दिस पॉइंट, एंड स्टॉप लॉस हम लगाते थे इस लेवल के ऊपर ऑफ 10 पिप्स, ओके? सो देन वी थॉट दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग आवर एंट्री सो लेट, जो पॉइंट से एक्चुअल जो इधर से रिवर्स कर रहा है ना, व्हाई नॉट टेक आवर एंट्रीज एट दैट पॉइंट? सो अब से हम क्या कर रहे हैं, हम लोग वी आर मार्किंग another support or resistance near to this breakout, और उधर पे अगर रिजेक्शन आता है, so we are gonna enter here at this point, क्योंकि वी नो ऑलरेडी नो कि इसको यहाँ से रेसिस्टेंस लेके इधर गिर के हमारा एंट्री ट्रिगर करना ही है, तो हम लोग वी आर टेकिंग लिटिल बिट अर्ली एंट्रीज सो दैट आवर स्टॉप लॉस विल बी मोर बेटर इन अ सेफर प्लेस, हम लोग टीपी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। So that's the plan now, so that's why the levels also here which I have marked, there are two levels here. इसका ब्रेकआउट होने देंगे, ब्रेकआउट होने के बाद ओरिजिनल एंट्री आफ्टर इट क्रॉसेस दिस लेवल अगेन इधर पे होती है, बट विल टेक अवर एंट्रीज हियर एट दिस लेवल, इधर से एंट्रीज लेंगे और इधर से विल गो फॉर सेल साइड ट्रेड, बट व्हेन एज सून एज इट विल क्रॉस दिस लेवल, राइट? तो हम ऊपर से कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे इधर पे, हमारा स्टॉप लॉस जो है इधर पे कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल एंट्री आवर स्टॉप लॉस विल बी स्टिल प्रेजेंट हियर। तो इसे हमारे जो स्टॉप लॉस जो हमारे छोटे लगते थे, जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते, इवन दैट प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व बिकॉज ऑफ द अर्ली एंट्रीज एंड विल गेट अ बिट मोर प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल कल मैंने एक ट्रेड लिया था, इट वेंट अराउंड 30 पिप्स, बट उसके बाद बिटकॉइन पूरा क्रैश हो गया था ना शाम में कल। आई टेल यू व्हिच वाज द ट्रेड। यप, दिस वाज द ट्रेड। तो इधर पे व्हाट वाज द साइकोलॉजी हियर वाज, इधर पे बाई साइड की एंट्री ली थी मैंने, तो आई हैड मार्क दिस रेसिस्टेंस लेवल हियर। आई जस्ट हाइड दिस इंडिकेटर फर्स्ट। तो ये हाइड करने के बाद what you can see that market is holding near a resistance. What does it mean? Whenever a market sustains near a support or resistance, it means it's inviting more और more sellers. जैसा अभी resistance पे इधर पे hold कर रहा है, इधर पे sellers आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। It means इनके stop losses ऊपर collect होने वाले हैं, and now market is gonna give a upside movement. इनका stop loss हल करने जा रहा है। So I knew that इधर से मेरे को buying ही उठाना है from this level. Okay. तो अब मैंने क्या किया, आई जस्ट वेंट टू दिस इंडिकेटर सेक्शन, इधर पे आई सॉ दैट देयर इज अ सपोर्ट बीइंग फॉर्म्ड हियर, दिस सपोर्ट लेवल। तो मैंने आई डिड नॉट ट्रेड ऑन अ ब्रेकआउट हियर, इधर पे मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करता ना, तो इधर पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट इधर पे निकल जाता, बट आई टुक माई एंट्री हियर डाउन, आई टुक माई एंट्रीज एट दिस पॉइंट एग्जैक्ट, जैसे ये टैप हुआ आई सॉ रिजेक्शन, आई केप्ट माई स्टॉप लॉस बिलो दिस एंड आई टुक माई एंट्री, एंड हियर I was getting around 33 pips, बट इधर से मेरा टीपी था अराउंड 70 पिप्स का, सो आई वाज होल्डिंग द ट्रेड। फिर वहां से कुछ तो न्यूज़ आया, पूरा बिटकॉइन क्रैश हो गया। आई जस्ट शो यू यस्टरडेज ट्रेड, ये न्यूज़ की वजह से क्रैश हो गया, और एल्स ये ट्रेड में इट हैड पोटेंशियल टू गिव अराउंड 70 पिप्स, यू नो। इसे थोड़ा बड़ा कर लेना, गो टू दिस, ओके, यू कैन सी इट।
इधर पे एंट्री की थी और इधर पे इतना ऊपर भी गया 20 पिप्स, देन इधर पे क्रैश पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया. So here at this candle I took my entries. The actual entry was here on this breakout, right? The actual entry was here on this breakout. ताकि क्योंकि इसे ब्रेक करने के बाद हम आई न्यू द आइडिया कि इधर से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है. So what happened here, the another guy who trades with me, my another friend, he was not knowing this concept. So he took his entry after this breakout, but I took my entry before him only at this point. तो जैसे ही उसने यहाँ पर एंट्री किया ना, मार्केट थोड़ा बहुत इतना ऊपर गया ना, ही ट्रेल्ड इस कॉस्ट टू स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, बिकॉज ऑफ विच जब ये पुल बैक आया ना, इधर पे इसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका था. बट फॉर मी व्हाट हैपेंड इज आई हैड टेकन माय एंट्रीज एट दिस पॉइंट, राइट. क्या हाल है सभी, सब ठीक ब्रो. अरे भाईजान कहाँ ही तुम्हें, इमाद भाई, इतना कॉल कर रहा हूँ सुबह से मैं तुम ना. By the way, yesterday we both were awake till 2 a.m. backtesting our strategies. Till yesterday 2 yeah. बैगन तो एपीएन आ गया, समझ नहीं आया भाई क्या बोले. थोड़ा सा the health is little bit not good. By the way, who is new to the stream, subscribe to the channel, like the stream. So I'll just come back to here. So मैं क्या बोल रहा था, my friend took this guy on the chat, Imad Arif, he's coming now. नजला जुकाम, ये क्या हो रहा है भाई. So he took his entry here, but he did cost to cost here. उनका cost to cost लेको market went up, but my entry was at this point because I took the entry at the support level, not on a breakout. So even I had done my stop loss cost to cost, but here he had his trailing stop loss was it, but mine it was not it. I was able to capture more, around 17 pips compared to his entry. So now the idea is, instead of taking at the exact level नीचे जहाँ से, because we know it's gonna reverse, हमारा entry trigger होने वाला है, तो जो पॉइंट से वो रिवर्स होता है ऑब्वियसली एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ही तो रिवर्स होगा वो. तो विल टेक आवर एंट्री ऑन दिस टैप ऑफ दिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस. We are gonna trade like that. So we have back tested it a lot means a lot. Yesterday whole night we were awake until 2 a.m. 2:30 a.m. we were awake testing this. There was another trade. Little bit of health issues, guys. Okay, so this was another trade which we were planning, okay, yesterday night. So here there was a support being formed at this level, right? This was the support level formed. If we go to the 15-minute time frame also, gold was in a buying level. Even in the 5-minute time frame, gold, let it load. Okay, it was in a buying level. So we had an idea that gold is going upside, right? So here we drew a support zone here. This tool swings, and we waited for a breakdown. After a breakdown, who enters here? पर सेलर्स यहाँ पर एंटर हुए ना आफ्टर अ ब्रेकआउट, तो उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर प्रेजेंट है, प्लस दिस वाज अ बाइंग जोन. वी हैड अ फुल आइडिया दैट मार्केट इज गोइंग अप. So what we did is, next move, we saw that here there was a next support zone here. You can see, right? This is the next support zone here. So we had marked this support zone, and as soon as it tapped here, you can see after the breakout, the market tapped this level, right? So इधर से हमारी entry थी. This was the entry. We placed a stop loss of around 10-15 pips above this level, like below this level, and our TP is where the 15 minutes next level. That's around, second, किधर पे है वो, yeah, this resistance was our TP around 140 pips. और ये सब हम कर रहे थे रात के अराउंड 1:30 तक.
Can see the timing, it was around 12, so we were awake till 9 1:30 or 2. So we had captured even this trade, but we did not take our entries because it was too late night and we were just testing it. So according to our strategy, what we do is we wait for a breakout, then again when it reverses and crosses this level, we take our entry here and stop loss below this level. But if we were taking our entries here, right, if you were taking our entries here, so there were more chances कि market would take our stop loss, take a pullback, then again go up. So instead we found this solution कि पिछले support से ही इसको tap पर ही rejection पर ही इसे उठा लेते, and as soon as market crosses this level, our original entry will just trail our stop loss to cost. अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट को ब्रीदिंग स्पेस भी मिल गया, प्लस हमारा स्टॉप लॉस भी कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, एंड विल कैप्चर एक्स्ट्रा पिप्स. So this is what we are planning now. How much? There is around 18-19 pips of difference. Gold may be ready. Okay, I'll tell, mark these levels. I'll tell you the plan again. Breakout का वेट करो. After breakout, if it touches this level, यहाँ से अगर exact टैप पर एंट्री मत प्लेस कर दो. Don't place a limit order here. Let it go up. इधर से अगर रिजेक्शन दिखा रहा है from this candle, place your entry at this point only. Then don't wait for this level. इधर से ही प्लेस करो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ और सेल मार दो. Simple stuff. And in gold, we are planning to keep our stop losses of 15 pips. Okay. So what we'll do is, after we enter right at this tap levels, we'll first keep our stop loss of 15 pips. And then if it moves like around अगर मान लो ये ट्रेड का एग्जांपल, इधर पे हमने एंट्री ले ली, we kept a stop loss of 15 pips because 10 pips have become very much small stop loss. एक वीक में ही हमारा ये stop loss hit हो जाएगा. So if you take our entry here and if it moves at least till here, right, so we'll reduce the stop loss to 10 pips here. After then, if it gives still more move, then we'll do cost to cost at this level. At this level, we'll just trail our stop loss to cost, and this is how we'll manage our trades from now. फिर हमारा इतना बफर स्पेस भी बच के रहेगा एंट्री के बाद से, एंड वी कैन कैप्चर बिग मूव्स आल्सो. तो स्टॉप लॉसेस बहुत कम लगने के चांसेस है. कितना? इट्स अराउंड 7 to 8 पिप्स का जोन है. होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. From here we can expect good selling. Yes, I have fever now. बुखार भी आ रहा है. Headache has also started. Weather here is just crazy, dude.
अल्लाह ब्रो, क्या हेडेक हो रहा है भाई सब में। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है। By the way, we are planning buys on gold. We are waiting for this breakout. After this breakout, इधर से या इधर से, दोनों लेवल में से एक लेवल पर we have to go for sell side trades. I'll just mute the mic, नहीं तो मैं इतना ज़्यादा I have cough right, तो it will create a bit of irritation for you guys, so I'll just mute the mic. By the way, कैसी चल रही सब लोगों की ट्रेडिंग? All good? How is the December month going on? I hope you guys are improving your trading. We'll wait gold to behave like this, then we'll go for a sell side trade from this level, either this level or this level. But this is our main level where you have to notice gold, because after this level breaks, liquidity will kick in. After liquidity, it will take rejection from this level or this level, and then we can see a downside move.
टेल समथिंग गाइस, टेल इन द लाइव चैट, बात तो करो, इतना बोरिंग क्यों बना रहे हो लाइव सेशन? हाँ, कुछ तो बोलो भाई लोग, टेल समथिंग, हाउ इज योर ट्रेडिंग गोइंग ऑन, टेल समथिंग इंटरैक्टिव। एकदम बोरिंग है, when I'm quiet, when you guys are quiet. नो लाइफ टाइम इसलिए बहुत हालत खराब चल रही है ब्रो। आई कोल्ड, काफ, फीवर, एवरीथिंग, इवन हेडेक। अभी भी बहुत ज़्यादा कोल्ड है, काफ है, फीवर हैज reduced, बट हेडेक भी है बहुत खतरनाक। तो जस्ट रेस्टिंग yesterday, और शाम में when I was recovered I did not feel like live streaming, क्योंकि 9 बजे बस I felt little bit better. So me and my friend together, we both were awake till 2 a.m. 2 a.m. तक we were just backtesting and improving our strategy. So we have refined it more and we have made it more better, हमारे strategy को, so that we find good more better moves. So till night 2 a.m. we both were awake, we were working on this. So बहुत सारे additions किए हैं in this strategy. We'll just surely
give our best so that we get best trades, and छोटे stop loss में we capture big moves. इधर से एक बाइंग आ सकती है, बट इधर पे कोई एक सपोर्ट जोन में चले था ना, इधर से एक बाइंग ले लेते हैं टिल दिस लेवल. Maybe around here we can see a buying trade. I'll just tell you another plan. जब इसे ब्रेक करता है ना, नॉर्मली व्हेन यूज टू ब्रेक वी यूज टू ट्रेड ऑन रिवर्सल, राइट. इसे रिवर्सल होने के बाद वापस से जब ये लेवल के ऊपर आता है वी यूज टू टेक अ बाय से ट्रेड, राइट. बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, जब ये रिवर्स होके इतना ऊपर आने टाइम पे वी आर जस्ट मिसिंग दिस मेनी पिप्स हियर, राइट. इट्स अराउंड 10 15 20 पिप्स रेंज हम लोग मिस कर दे रहे हैं. तो हम क्या कर रहे हैं अभी, वी आर फाइंडिंग अ गुड सपोर्ट और रेसिस्टिंग जोन जस्ट बिलो दिस ब्रेकआउट. जैसा फॉर एग्जांपल दिस इज द रेसिस्टेंस विच गॉट ब्रोकन, नोट से सपोर्ट नाउ. तो अभी इसको ब्रेक करने का जैसे ये लेवल पर हम थोड़ा रिजेक्शन देखते हैं ना, वी आर टेकिंग अवर एंट्रीज फ्रॉम दिस लेवल ओनली, कीपिंग अवर स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल, सो दैट हम लोग इतना जो एक्स्ट्रा मूव इधर पे है ना, वी आर एबल टू कैप्चर एंड वी कैन गेट गुड मूव्स. So this is the new plan here. How many pips it is? So our entry point, it's around 18 pips. We will get a 18 pips buffer. 18 to 20 pips का buffer मिलेगा. और इधर पे the plan is, अब normally हमारे entry it happens like this, right, at this level. We place a stop loss of 10 pips below this level. So कभी कभी क्या होता है, after entry एक pull back आता है, pull back हमारा stop loss लेके वापस ऊपर उठ जाता है, right. So these moments what we'll do is, we'll just take our entries at this point, right. तो हम इसके नीचे स्टॉप लॉस ओनली इन गोल विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 15 पिप्स, ठीक है. क्योंकि वी आर टेकिंग ऑन अ टैप एंड गो लेवल, राइट. एक सपोर्ट पर डायरेक्ट बिना किसी इधर पे हम रिजेक्शन पर एंट्री ले ले रहे, सो यू हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 15 पिप्स. इधर से लेके हमारा एंट्री पॉइंट जैसे इधर पे ट्रिगर हो जाता है, राइट. तो हम क्या करेंगे, एट दिस पॉइंट विल ट्रेल अवर स्टॉप लॉस टू कॉस्ट. सो नाउ दिस ट्रेड हैज जीरो रिस्क. उसके ऊपर से हमारा इतना ब्रीदिंग स्पेस एक्स्ट्रा बच गया है फॉर द मार्केट टू मूव. So this is the new plan which I have added. So even in this sell side also, जो इधर पे 3 levels मैंने mark किए हैं, this is the main level. After this breaks, new buyers will enter at this level. This is where the liquidity will kick in. इसके बाद it can take a rejection from this level or this level. तो हम लोग वापस रिवर्स होके इसके नीचे आने का वेट नहीं करेंगे. We'll enter at this point or we'll enter at this point. From where there is a good rejection, we'll enter at that point और एक सेल साइड के लिए ट्रेड जाएंगे. So that what will happen is, instead of taking our entry here इसके ऊपर 10 pips का stop loss ऐसा लगाने से अच्छा, if we get our entries at this point, ठीक है, if we get our entries at this point, तो हमारा इतना जो स्पेस है वो it will be utilized, right. So instead of waiting it to cross and come down, because at this point obviously that's a rejection era, we came to know, right, कि market is going down, right, to cross our this level and it's gonna fall now. So when we know that market is gonna reverse from this point, so why not enter at this point only, so that इसके ऊपर हमारा stop loss भी छोटा मिलेगा और we'll get more trades also. For example, if we keep our stop loss here, keep this original stop loss here only, okay. So if we take our entry here, so the stop loss becomes 350 pips, right, because this is our original entry according to our strategy. For now, because of this addition, we are taking our entry at this point, so our stop loss is of just 15 pips. Or either पे we trail our stop loss cost to cost also. If we trail our cost to cost, according to this entry, now we are risk free. We are not risking anything on this trade. But if we see according to our old entries which we were taking on a reversal, at this point only the stop loss we have to keep up is around 20 pips of stop loss. So this is the problem. और अगर इधर पे भी imagine now the market, we have taken our entry here, okay, at this point. There are two people, just imagine, like there are two people here, fine. One guy has taken his entry at this point, another guy has taken his entry at this point, fine. Now
market has fallen till here. Okay, it has fallen till here. I have done cost to cost, even this guy has done cost to cost. But if market reverses and it again comes to test this level, this guy's trailing stop loss will go, he'll be out of this trade और ये इधर से dump हो जाएगा. But I'm still cost to cost. Market will just take a pullback and it will fall. I'm still in the trade and I'm able to capture more pips if we compare to this guy. So this is what we have planned now. So this is a new addition which we are doing now. So that's why there are two levels here. This is our main liquidity level. This is our resistance zone. This is our resistance zone. जिधर पे भी it's not like we are taking our entries blindly. No, इधर पे आने का it should show some rejection, right? It's not like इधर पे आगे ले लिए एंट्री लेते पता चलता इधर पे आ गया वो. So instead of that, what we are doing is इधर पे आने दो एक rejection. We'll see any rejection. After a rejection is formed, at this point we'll enter. Or if market does not respect this level, if it goes till here, if it's taking rejection, we'll sell at this point so that we get extra buffer of this many pips. Early entry, small stop loss, early risk free with more breathing space for the trade. क्या सर फट रहा है भाई ये. ऊपर से ये लाइट है, then my laptop screen, then my tablet screen, then my mobile screen, so many screens in front of me. And upon that we were awake, we did not sleep whole night. नींद ही नहीं आती when you are fully dedicated towards something. When you did you get the dog or have no, I have gone to doctor, I have taken my medicines. It takes time, right, to recover. I fall ill very much rarely, but जब भी मैं बीमार पड़ता हूँ, it takes time to recover. That's the problem. Maybe in a year I fall ill maybe 2 to 3 times, or maybe not even that. But when I fall ill, it takes time to recover. When you are dedicated towards something, right, when you have to achieve it, you have a deadline. The time you just forget your sleep. I don't get sleep nowadays. So me and my friend together, we daily sit till 2 a.m. in the night. We backtest, we find new ideas to improve ourselves, improve our trading. And even yesterday we were awake whole night. We slept around 2:30 a.m. We slept, then we woke up again at 5. So let's see. We are putting our 100% efforts to flip this account. Rest, let's see what's gonna happen. Either way we know it will give a breakout, right? If it gives a breakout, just keep an eye on this level. If it takes rejection here, right, keep a 15 pip stop loss here and just go for a buy side trade. Simple. Because after this breakdown, new sellers will enter. This is where the liquidity will come, and from here the market makers will just push the price. According to the 15 minutes also, it's a buying level. According to the 5 minutes also, 5 minutes buying level is down. Does not. Let's see. If we have to notice first, if there is a proper rejection from this level, then we can plan a buy side. Proper rejection. Let a one green candle close here. After a green candle closes, right, we can go for buy. Don't take this trade now. I'm just putting the RR and keeping, just to see that what we have planned is working or no. And a stop loss whenever we trade trades in gold, keep a stop loss of 15 pips. For BTC it is 10 pips, and for gold it is 15 pips of stop loss, because 10 pips stop loss is becoming too much small. Here the liquidity is taken. This is a good buying level. This is just way of planning, okay? Here always wait for a green candle on this level. If a green candle closes, after that only go for an entry. Now here a red candle is closing, so don't enter here.
Wait for a green candle. Good green candle, not a doji like this. A pin bar or a good green candle, incomplete candle. Hmm. To wait for a green candle to close. How much fluctuations, dude? क्या ये fluctuations मार रहा है? Green candle to close. Why? If we see a price retests this level again, right? तुम्हें ऊपर आओ, भी तुम्हें नीचे क्या कर रही हैं? तुम्हें ऊपर आओ. But this is working, the strategy which we have planned yesterday. नीचे आने दें. Waiting for this final. According to our old strategy, our entry would be here. Okay, this is according to our previous strategy, and according to our new strategy, our entry is somewhere here. Okay, so at this point, what we could do is reduce the stop loss to 10 pips first. If it gives a breakout and if it goes little bit more now from down only, now for example, you can see it's going up, right? Which other? Yeah, right. If it goes till this high from down, you can just trail your stop loss to cost to cost. Now what we have done, we have trailed our stop loss to cost, right? अब मान लो the banda who have taken his entry here, even he has done his stop loss cost to cost at this point. This is live example what I'm giving. So whoever has taken, even he has done, the above person has also done the stop loss cost to cost. The person who has taken down has also done his stop loss cost to cost, right? So now let's see. Will it come and take a pullback, remove this guy, then it will go, or what's it's gonna do? We are getting an early entry of 20 pips. Was too fast, couldn't get in. Yeah, that's fine. Let if you we are in also aiming for the sell side level, right? If you don't get your entry, don't no problem. We can go for a sell side entry here. But you got idea, right? How you have to plan your trades. Now, according to this entry, now how much we got around 160, like how much 16 pips, right? But according to this entry, we have already captured 37 pips. So, if and if by chance, if it reverses also right from here, if it reverses and comes to this level also, if we would have taken our entry here, our trailing cost of trailing stop loss would have gone. But as we have entered here down, our trailing stop loss will not go because still we have space. Entry vision, no problem, brother. It was this candle was too fast. This candle was from too fast. We were planning. अगर ये नीचे नहीं गिरता after this candle only, if the next candle here, ये इतना नीचे गिरने के बदले, if it would have given a small wick here, then if it was taking a rejection, we could have entered from here only. But it went so down, then again so quick move. We were waiting for this candle to close.
It did not take a pullback also. Next candle just went up. That's fine. You have missed the entry, that's fine. But you guys understood the concept, right? What we are planning to do. Now this trade will easily go till this next 15 levels, 15 minutes resistance, and that is around 118, 120 pips. So always wait for a proper liquidity graph, like a proper breakdown. Let the market grab the liquidity, find a new good support or resistance zone. When see rejection from that level, and just go in that direction so that you capture these extra pips. These small refinements only will help you grow. By the way, whoever is new to the stream, like the stream, subscribe to the channel. We have a long way to go. 23 pips extra we are getting here, and a very much safe trade. Now there is very much less chance if the market is gonna come till here, and then it will take a trailing stop loss and go up. It's very much less. It's mostly gonna come till this blue zone. From here only it can go up. So our entry is cost to cost. Even then it is cost to cost. We are very much safe here. Hope you guys are understanding what I'm trying to tell. You guys are understanding, right? What I'm trying to tell. Understand the concept, the logic behind this trade. You'll be able to take these kinds of trade by yourself only. The only problem is you will not have these kinds of levels which I am marking. That you can copy from my stream, or if I am not streaming, if you want these kind of levels, you can contact me on Telegram. Simple as that. But this is a good selling level. From here also we can find a good selling trade. Re-entry possible. Re-entry possible. देखना पड़ता. We have to see if it gives a slow selling, and if it takes a rejection from this zone, and go for a re-entry.
This blue zone which you're seeing, right? This is the re-entry zone. एक सेकंड रुको ब्रो, मैं VPN को I'll connect the Bluetooth earbuds. Bro, tell something. हेलो अरे इसमें क्यों आ रहा साउंड? I wanted to come in this intro. Tell again. हेलो Your voice is व्हाट coming हैपेंड? this laptop speaker, but I wanted to come in this. Yes, no. Tell now. हेलो 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 Speak now. व्हाट हैपेंड ब्रो? Now it's working. No, whatever you're speaking, right? Uh, हाँ, it's getting captured in this microphone and it's echoing in the live stream. So I have to connect my earbuds to hear you clearly, and your voice will also not echo. Our yesterday's addition is working, वेट आई विल but सी। sometimes this kind of volatility na, at these levels, so quick dump then pump, this is a bit confusing at this point. 60 pips up, guys. But don't be informed because up there are selling levels found. Bro, you have marked the selling levels, right? नो नो नो, आई हैव टू मार्क। Mark it and tell me where is this levels. You have connected that screen also, right? नो नो, आई विल कनेक्ट नाउ। Hmm. Re-entry if someone wants to do it's possible somewhere here, but the stop loss should be of 15 pips. Then the TP which you'll get is around 90 pips, 95 pips. But if you had entered down, then you'll get 120 pips. Re-entry will be possible at this level only. Around this level only. But it's risky. It's not 100%, it's risky. Come here and it can go up like this. Or it can fully go down also. It's risky. But this is the re-entry level. Like the stream guys, whoever is new, subscribe to the channel. Yeah, the best scenario would be if this candle was closing strong here, like this full candle, next candle would have gone little down, and if you would have rejected from this level right to here, I'll just zoom and show you guys.
what would be the best entry scenario here will be here, keep an eye on this. Here it's coming on a re-entry level. If this candle would have closed like this, next candle would have come here, formed a bottom wick, and again if it would have been crossing this level, right? Here only you could easily plan your stop loss below this level, plan your entry here, and you could have entered. But this candle just shooted up. This candle was formed doji, then the next candle just went down, then it took rejection, then it just shooted up. This was the re-entry level from where trade went around again around 19 pips up from the re-entry level. If you guys see, one second, I'll just not aware right now. I placed the RR exactly at this point only. It had went around 20 pips. Now again taking a rejection, 10 pips. Bro, imagine did not go to college. No, That guy. even here isn't one. After doing a setup, check your WhatsApp. Did anyone get the re-entries here? Plus can be of this 8.6 pips. This is original entry where it is cost to cost. This is the second entry, re-entry kind of thing, where the SL is 8.6 pips. From there the trade is up 18 pips. The delay in the stream is also just 2 to 3 seconds max. These re-entries are always risky. Sometimes it works, sometimes it does not work. This was the actual entry, bro. Yeah, that was the actual entry. But according to our new thing, You took this one, right? little bit down, bro. Yeah. So what we had planned yesterday? Yesterday we had planned right that we'll go for the below level. Could have taken from here only. Hmm. That's where I have posted the RR also at this point in this level down here. This is just this thing, re-entry type. Entry would have been at this point or at this point. This point was the most high probable point. This was the just re-entry.
You're going for the trek tomorrow? Like they were telling, bro. I told मेरा doubt है. Where? Sarika called yesterday. One second, I'll just mute mine and yours mic. What? We were talking something personal, so it was on mute. But now you can listen to us, guys. No problem. केवल input busy. Bro, कुछ बोलो. Hello. Yeah. Even the people who have re-entered here, right? Even they would have made good money, around 30 pips. Where is our moderator? Moderator पता नहीं ना. एक moderator is doing engineering, another moderator I don't know where he is. This was a re-entry point, right?
इधर से अच्छा खासा दिया है, 30 पिक्स का स्कैल्प निकल जा रहा है, whoever have taken from this level। फिर जो भी नीचे से लिया ना, दिस वाज द बेस्ट एंट्री हियर, 60 pips। Bro Iman, you can see my screen, right? Mark the resistance zone in your screen. I've already marked it. Mark, right? Which where did you mark? The first is around you can see my screen, right? No, no, no. Huh? First is around, no, I have not connected till 4195. 4195। Yeah. अच्छा। Second is around, Bro, mark that levels inside this 15-minute zone so that it becomes high quality. even in 15 minutes, good level, bro. Like inside that indicator level, like if you mark this level now around 4197, 41. I have even marked that level also. yeah, we'll target this level. If it breaks this level, then above this you can see there is another level right near, what is that, 4199. Hmm. If we see a good rejection from there, let's take entry on 4199 only. If it breaks this level also, and if it takes rejection from this 4200, this level, if it takes rejection from here, we can go for sells from this point only. We can get a buffer of easily around 30 pips buffer, we can get 25 to 30 pips early entry. From the actual entry point, it's around 20 pips. We can plan this. Gold is bearish today. Gold is bearish. It's just a pullback what we are trading. BTC fully into this choppy zone. That is better to avoid this. अरे भाई, एक बैटरी का एक प्रॉब्लम हो गया इतना खतरनाक इसमें। Even yesterday's night gold trade was so good, na? Hmm. Around It was 150 pips. ah, it went more than 150 pips after that pullback. But the only problem was it was at night 1 a.m. Even that BTC sell also was very much good, which later after missing the trade we realized. People is in middle they just skip the stream, they don't see. Then after the entry is done, that'll trade miss. So be in the stream regularly. Watch full stream. At least if you don't get proper trade, if you don't get any trade, at least you'll get knowledge about how to trade. Bro Imad, I'll send you a number Okay. after this stream na. Once you just contact that and see. Okay.
Let's see what that guy tells you. Mm, just put one message right now and put your details there and ask them. They can just call you directly. Mhm. Just put a message now, like hi or something like that. Then they'll ask some details. Just send the details. Then you can tell that you can directly call them. They can directly call you instead of texting. 666 pips. 66 pips basically. Yeah, WhatsApp man. ये क्या कर डाले भाई? Try to copy that code and do it again. नहीं 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 अच्छा 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 अच्छा. Okay, fine. I understood क्या what you're बोलना trying चाह to रहा tell. हूँ. I understood what I understood. I thought there is some error in that code because of which हाँ, it's not running. Telling about BTC, right? Hmm. BTC marked this level, guys. Hmm. Okay, let's observe that. And mark this level also. 93,638. Or else then the final level is at this level only. 9,400. No, 94,000. 94,000 is the next level. भाई गोल्ड क्या फट रहा है ब्रो. वो वापस से from the tree entry level also it has gone up around 75 pips. See gold? Bro, see a stream on your tab. I'm seeing. It's in refreshing mode. No, it's not refreshing. Then why it is showing me? Yeah, it's not, Nah. bro. Nah. And the delay is also of just 2 seconds delay. Not refreshing. Reduce the quality. Watch in 480p.
The stream is on only always. Kept it here. क्या trade bro? But people don't get into FOMO who are not able to enter on this trade. We'll capture a sell side trade from up. In this thing also same strategy, right? Sell from above level and instead of waiting till here. There's one more level though. It's taking rejection from there in gold. Hmm. In gold, bro. In gold, gold. Yeah, I'm seeing gold only. There's a resistance which I had marked first. But इसे नीचे से push आ रहा. मैं डाल डाले ब्रो. क्या बोलो? मैं तुमने एक ये भेजा था हाँ, ना. अच्छा भेज रहा हूँ. मैसेज मत करो, सिर्फ पूछो कहना है कॉल कर लेके. हाय करके करे हूँ मैं. उसमें सामने से एक बॉट ये भेजता. ठीक है. बॉट एक रिप्लाई करता, उसमें जो भी उन्हें पूछ रहा नहीं डिटेल जस्ट सेंड इट दे तुम्हारे वाले. फिर उन्हें जब रिप्लाई करता नहीं बोल डालो कि कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल. बीटीसी क्या हो रहा. अनलिस्ट प्लेस ऑन अलर्ट इन बिटकॉइन. अब देखो कोई भी नहीं देख रहा. जब इन्होंने फिर से जब मिस कर डालते ना ट्रेड ये बंदे लोग तब आते दैट वी मिस ट्रेड विद दैट वी मिस ट्रेड. मैं बंदे को 24 आवर्स का टाइम और देता है ब्रो.
I have messaged them, but they have not seen. वो आता है, एक बॉट रिप्लाई करता है। हाँ कर दिया, उसके बाद फिर से किया मैं। तुम्हें डिटेल्स डाल दिया ना? क्या डिटेल्स मतलब? उसमें मैंने तुम्हारा नेशनलिटी, नेम, मेल आईडी ये सब पूछ रहा है नहीं? रिप्लाई नेम, ईमेल आईडी, सिटी, कंट्री, हम्म। वो डाल के जब उन्हें सामने से रिप्लाई करता नहीं है, तभी तुम्हें से बोला लो जस्ट कॉल कर लेता हूँ। हम्म। पर एक 1 मिनट का जोन भी है, देखो उधर है। देख रहा हूँ, तब से सही माकर को बैठी हूँ भाई। ये ना रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रिजेक्शन ले रहा। हम्म। बट ऊपर एक का कैट अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इट टेक्स ये लिक्विडिटी ग्राफ बीए वाले लेवल से ले जो लेवल पर अभी न है, और ऊपर से रिजेक्शन ले, क्योंकि देखो 15 मिनट्स का लेवल जस्ट अभी जस्ट टैप हुआ है वो। हम्म। ले रहा रिजेक्शन है। ये कैंडल रेड कैंडल क्लोज होने देंगे, फिर एक छोटा सा रिजेक्शन आया तो बिना वन से प्लान करेंगे देखो, मतलब डेस्परेट नहीं ट्रेड, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन लिया इन्हें। बट मेरे को ज्यादा गट फीलिंग्स ऊपर वाले लेवल से चाह रहा, पता नहीं क्या है कि, देखना 15 मिनट लेवल जस्ट टैप हुआ है, न्यू कैंडल ओपनिंग की है, ये ने शायद से बॉटम विक भी मारने आ सकता है, इतना क्या सीन। ट्राई मारते हैं एक, हम्म। 0.1 से ट्राई मारो एक, यहाँ ऊपर वापस से लेवल पर टैप किया तो। रुको रुको। बट बेस्ट सिनेरियो ये रहता कि इन्हें ऊपर वाले लेवल से रिजेक्शन से ऊपर के बहुत स्ट्रांग से लेवल।
यहाँ से 10 पिप्स का स्टॉप लॉस भी बहुत रहता। हम्म। नहीं, भी परचेज करेंगे। हैं? इसे यहाँ लिक्विडिटी बनाने देंगे, क्योंकि ये सिंगल टॉप वाला लेवल है। 5 मिनट्स पर गए तो वही डब्ल्यू का ब्रेकआउट वाला है, तो ये असली स्विंग तो ये है, जहाँ से नहीं रिजेक्शन ले रहा अभी। इसे लिक्विडिटी बना के ऊपर से चलेंगे। मैं सबसे बेस्ट एंट्री रहता है एच लेवल ना, 199.74। 199। 0.74 पर देखो, ये लेवल है ना इंडिकेटर का सेलिंग का। इसे भी ब्रेक एकदम टॉप पर एंट्री मिलता। होगा, और 10 पिप से ब्रेकआउट देना उसका। ब्रेकआउट दे रहे, ब्रेकआउट देखो ऊपर का लेवल को टैप करने का ना, बात चल रहा तो। अभी तुम्हें कौन सा लेवल पर फोकस कर रहे हैं सर? ये वाला लेवल पर ना, जो फॉर्म हो रहा 97.67 के पास ना। 0.67। वो लेवल तो मैं मार्क ही नहीं करके हूँ। करो भाई, इधर भी तो कितना मस्त रेसिस्टेंस बना है। स्विंग्स देखो इधर से। तुम्हें पहले ये कर लियो ब्रो, एक कनेक्ट कर लियो, मेरे और तुम्हारे जो लेवल्स अलग अलग बन जा रहे, कंफ्यूजन होता। इधर देखो, स्विंग्स भी क्या मस्त क्लियर स्विंग्स है। ये एक स्विंग होगा, ये एक स्विंग होगा, ये पीछे के स्विंग्स देखो। देख लिया, देख लिया। अब कोई नहीं देखता स्विंग। जाने के बाद जब ऊपर रहता है नहीं, तब 7 8 9, 9 की पीक टाइम पर bro, आज 9 आए थे लोग यहाँ देखने। क्या फर्क पड़ता, ब्रेकआउट तो हो गए। कैंडल पे क्लोजिंग देता लेना एक। दे दे लिया, मतलब बहुत छोटा सा दिया है इन्हें क्लोजिंग, बहुत छोटा सा दिया है। बाइंग भी स्लो आ रही। हम्म, इन्हें थोड़ा डीप जाता ब्रो, ये ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप तक तो जाता चाहिए। हाँ, 99 के पास। ये पुल बैक रहेगा एक, नीचे से तो पुश आता ही थे। अब जो भी लोग हैं अपना फोमो देने का ट्राई कर रहे हैं हम्म। स्टोरी स्नैप सब में, उनको आइडिया नहीं कि फिर फेब मीडिया तब तक हमें ऐसा फोमो देते हैं क्यों ना हैंडल नहीं कर पाते। ये प्रॉपर रेसिस्टेंस है। हाँ, रिजेक्शन तो ऊपर से ले रहा है। ओजीज अकाउंट से ही ले रहा हूँ मैं तो, 0.03। कौन है भाई, गोल्ड। 1 मिनट। इसे हाइड कर लेता हूँ एंट्री तक की।
पुरानी स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो इधर पे एंट्री हो जानी थी हमारी। हमारी अभी एंट्री होना था सभी हमारी। पर एक वेट करते हैं, एक पुल बैक ऊपर लेना है, क्योंकि इधर से एक पुश। ट्रेन लाइन पर है वो, अभी ट्रेन लाइन पर है वो। हाँ, ट्रेन लाइन का एक पुश आ सकता। ट्रेन लाइन ब्रेक हाथ लेंगे चलो। ऊपर उठ रहा ही नहीं, इसे पुश मिल रहा है नीचे से। ट्रेन लाइन एक अपडेट कर लियो, ये वाली और जो रिसेंट वाली कैंडल को लो को ड्रॉ करके। आजकल थोड़ा सा रिस्की हो गया क्रॉसिंग पर लेना। या तो प्रॉपर रेजिस्टेंस पर से ही सेल करो, या फिर क्रॉसिंग पर सेल करना जरा रिस्की होगा, रिजेक्शन बहुत बन रही है, ऊपर उठ गया वहां से उन्हें वापस से। एक लेवल का भी स्टिक हो जाओ, हमें यहाँ 98 वाला लेवल को स्टिक होना, या नहीं 4200 वाले लेवल को। फ्रॉम वेयर आर यू प्लानिंग सेलिंग? फ्रॉम 88 to 153। Great, brother. But you had missed the trade, right? Where did you take your trade? Like on the re-entry? रिजेक्शन तो ले रहा भाई इधर से। पर 199 से रिजेक्शन आया है। ये ट्रेन प्लान लाइन करके। ब्रेक, ये ट्रेन लाइन ब्रेक होने दो। ट्रेन लाइन खींची ना हमें, वो ट्रेन लाइन ब्रेक होने दे। बीटीसी में अलर्ट बचगा कौन सा की? ओके, बीटीसी इज आल्सो ऑन अ रेजिस्टेंस नाउ। हम्म। बीटीसी छोड़ो, और टाइम है आने का उसका। गोल 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 पे फोकस करो। इसकी तो ये बराबर नोटिफिकेशन, ये 22 बटन के पास ही चला। नोटिफिकेशन म्यूट। हाँ ब्रो, इधर से रिजेक्शन लिया तो यहीं से मारेंगे सेल, क्योंकि 15 मिनट्स का लेवल का ये अच्छा लेवल है ये। ले रहा रिजेक्शन, लेकिन वो रिजेक्शन फोर कम नाइन है। नाइन का ये हो रहा वो, ब्रेकआउट दिया फोर एक्सेल, नाइन नाइन का लेवल का। एक्सेल प्लान करेंगे एंड से। कोई मिनट। सबसे पहले उससे ले लेता हूँ ये फंड। ग्रेट ब्रदर। बट वेयर आर यू टेकिंग योर ट्रेड्स? ट्रेड्स किधर से ले रहे हो? एक रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ था, यहाँ से सेल मारेंगे ब्रो। हम्म। इफ अ रेड कैंडल क्लोजेस हियर इनटू दिस जोन। आ जाओ, एक खतरनाक रिजेक्शन इधर से। वैसे भी चाहिए, यहाँ से सेलिंग को ही जाना है, और एल्स द नेक्स्ट लेवल विल बी हियर ओनली। Keep an eye on gold. I'll just see Bitcoin till then. बिटकॉइन अपने लेवल्स पर आने तो टाइम है, बट इट्स टेकिंग डायरेक्ट रिजेक्शन। गोल्ड इज टेकिंग रिजेक्शन। एक अच्छे से रेड कैंडल क्लोज होने दियो, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। ये लेवल के नीचे आने पर सेल करेंगे। विल सेल फ्रॉम हियर, इफ इट कम्स हियर देन विल सेल फ्रॉम दिस लेवल ओनली।
15 पिप का रिस्क रख के 99.73 के पास से ऊपर का 5 मिनट का लेवल भी टैप हो गया सेलिंग का इसका। ब्रो एंट्री एंट्री पर आ गए। लेट्स प्लान एंड सेल से ट्रेड हियर। हाँ, रुको एक सेकंड थोड़ा। प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो क्रॉस हुआ तो एक सेल सेट प्लान करेंगे, ठीक है? कौन सा? फिर से ये वाला ग्रीन कैंडल से क्रॉस करेगा तो लेट्स गो फॉर सेल साइड ट्रेड हियर। हम्म। I'll go with 0.02 here क्योंकि इधर थोड़ा डाइसी दिख रहा ट्रेड ये। कोई दूसरा अच्छा लेवल है क्या सेलिंग का? नो, दिस इज ओनली लेवल व्हिच इज बीइंग और फॉर्म्ड। ऊपर है, बहुत ऊपर है वो। शैल वी प्लान अ सेल साइड ट्रेड? हम्म। रुको, रिजेक्शंस ले रहा। ये कैंडल का वेट करेंगे क्लोजिंग का। 15 मिनट कैंडल लुक्स गुड, 5 मिनट कैंडल लुक्स गुड। It's near our entry point. Entry point means if it crosses this, इसके नीचे वाला लेवल crosses this low, then our entry point will get triggered. प्रॉपर रेड कैंडल तो क्लोज हुई है। हम्म। हम्म, आ रहा है। आ रहा है। From there a stop loss of 15, right? हम्म। ट्रेन लाइन भी ब्रेक होगी। करेंगे। Hmm. Let's plan. You have sold? सेल। When my ये क्या not enough money? मैं 2 मिनट्स बाद ही सेल मार सकता था, मेरा ये पीरियड आ गया ये रेड बॉक्सेस। अच्छा मार रहा है। हाँ, आई कैन सेल आफ्टर द नेक्स्ट। ये कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल क्लोज होता नहीं उधर पे ही मैं सेल मार सकता हूँ। क्या दिमाग खराब हो रहा है इधर पे। शिट मैन। व्हाट अबाउट इन अनदर अकाउंट? उसमें वो तो भूल ही गया था या उसमें या एंटर सेल। एंट्री इज ऑन 99.62 and 15 pips of stop loss from there. हम्म। Uh, if this trend line breaks like that time you can just enter again for self.
पीरियड गया क्या? ये अब तक भी नहीं गया क्यों? ये कुछ ग्लिच विच है क्या? पता नहीं। What the hell is wrong with this one? Oh yeah, this period has gone finally. What's our entry point? What else? 4199772. I don't know why it is ringing over there. One more trend line I break. Hmm. क्या? ये 3 लाइन से चल रहा है, नॉट इनफ कैपिटल क्यों दिखा के मर रहा? Showing full red here. Nonsense. क्या हो रहा है भाई? रोहिमद ऑर्डर भी प्लेस नहीं हो रहा भाई एक्सनेस में। रुक जा थोड़ी देर। और एक अकाउंट में ओपन है ना, छोड़ दो। हाँ। क्या कर रहा गोल्ड समझ नहीं आ रहा मुझे। अब तक तो चले जाना था नीचे इन्हें। टॉप लॉस को 10 पिप्स करके बैठ जाओ। टॉप लॉस सेज दैट 20061 entry at this point। चले तो जाना था। 15 पिप्स ही रखते। 15 पिप्स थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देंगे जो हिसाब से इधर पे प्ले कर रहा है ये। Everything is fine। क्या है? 15 मिनट्स का डब्ल्यू का भी है, वो डब्ल्यू ब्रेक नीचे दे सकता हूँ मैं। ये एक्सनेस पागल एक्सनेस। अभी गाली नहीं दे सकता है मैं, फैमिली देखती है। वो मी मारा मेरे दिमाग में सिर्फ। कुछ ज्यादा ही रेंज नहीं करना। हम्म। बच पाए क्या अभी तुम्हें ट्रेड में? देख तो रहा हूँ। हाँ बच गए हैं। कुछ ज्यादा ही रेंज नहीं कर रहा है ना, बहुत ज्यादा ही रेंज कर रहा है बंदा इधर पे। चलेगा मेरा, तुम्हारा क्या है? गया सर मेरा। सब कुछ मेरा तो तो सही इधर है। ऑर्डर ही पंच नहीं रहा, बट इवन माई एस एल हैज गॉन ऑफ हाउ मच, $11, हाउ मच, 13 और $14। मेरे दो अकाउंट्स है, दो ब्रोकर्स में।
कौन डिफरेंट है, लोड होना इसकी तो 13.14 मेरा गया। कल तो बहुत अच्छे ट्रेड्स बन रहे थे, आज पता नहीं क्या पता चल गया। सब तो अच्छा चल रहा था, क्या हुआ पता नहीं है। सीरियसली गाइस, yesterday when we were just trading offline, ऐसे ऐसे ट्रेड्स बन रहे थे ना। $9। लॉट साइज क्या था भाई तुम्हारा? लॉजिक एवरीथिंग वाज क्लियर, प्रॉपर रिवर्सल रेंज कर दिया ये। दैट्स फाइन, नॉट एवरी ट्रेड इज अ गुड प्रॉफिटेबल ट्रेड, कोई बात नहीं। 0.035 है, दैट्स फाइन। एक ट्रेड में रिकवर हो जाता है। आई वॉज इन दिस ट्रेड फ्रॉम 0.1 लॉट। ए भाई, मैं कितने बार बोलता हूँ, जस्ट कीप योर स्टॉप लॉस ऑफ 15 पिप्स और 10 पिप्स, व्हाई डू यू कीप 30 पिप्स ब्रो? फट्टे बिब्स भाई। तो आपकी एंट्री कहाँ पर हुई थी? वॉज योर एंट्री हियर, सो बिकॉज ऑफ विच आपका स्टॉप लॉस 30 पिप का यहाँ पर लग गया। इधर किधर पे थे क्या आपकी एंट्री, जो आपका 30 पिप्स और स्टॉप लॉस चल गया? क्योंकि इफ यू हैड हैव टेकन एंट्री हियर आल्सो, योर 30 पिप्स स्टॉप लॉस अभी तक जा ही नहीं सकता। स्प्रेड्स इट्स 1.6 पिप्स इफ यू आर यूजिंग एक्सनेस। इसमें भी और कितना, अराउंड 10 पिप्स और बचा है, देन देयर इज नो चांस कि आपका 30 पिप्स का स्टॉप लॉस जाए। यू हैव टेकन योर एंट्री एट रॉन्ग लेवल्स। Let's see Bitcoin. Bitcoin में अगर you have taken your entry at wrong position, so that's why you were supposed to lose the half amount of the, मतलब 15 pips का था, बाद में 10 pips को ट्रेल भी कर दिया था, so you are supposed to lose it from how much quantity did you take? 0.03, राइट। मैक्स टू मैक्स $5 आपको खोना था इसमें, ये ट्रेड में। माई ट्रेड बहुत कट हियर अभी। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ गेम। प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, बट व्हेनेवर विल डू बिग। अब जैसे इधर पे था ये बाइंग का ट्रेड, क्या गया था भाई। इधर से जो ट्रेड एंट्री था, विच यू गैस मिस्ड, दिस ट्रेड वेंट अराउंड कितने पिप्स गया है ये? 140 पिप्स। इवन फ्रॉम द री एंट्री लेवल इट वेंट 140 पिप्स, या फिर नीचे से इधर से एंट्री उठाते, इट वेंट अराउंड 160 पिप्स। कोई बात नहीं, विल सी।
बिटकॉइन में कुछ हो सकता है क्या? बट स्ट्रिक्टली फॉलो द एंट्री एंड एग्जिट प्राइस। जस्ट सी, मेरा 0.1 से $13.4 गया, 0.03 से आई हैव लॉस्ट $9। सी द डिफरेंस। जो ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाला होता है, राइट, वो एंट्री वजह से ही गिर जाता है, वो ऐसा टाइम पास नहीं करता है। लाइक हाउ गोल्ड वॉज डूइंग टाइम पास हियर, वैसे टाइम पास नहीं करता है। गुड सेलिंग लेवल हियर, पनौती। बट दैट्स फन, कोई बात नहीं। एनवाई सेशन में आते, टिल देन लेट थोड़ा सा मार्केट सेटल डाउन हो जाए और भी, लेट इट कम टू बेटर लेवल्स, विल डू एक अच्छा सा ट्रेड मारते फिर से। बीटीसी या गोल्ड में अच्छा सा ट्रेड मारते। एंड दिस सेशन हियर, कम टू द एनवाई स्ट्रीम, उधर पे आराम से बैठते टिल लेट, एंड जब तक एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलता, विल नॉट क्लोज दिस स्ट्रीम, ओके।